Hello everyone in the Ansarkari again, and today we will see the comprehension questions of the paper 2023 जो हम पिछली classes में भी ले रहे हैं. So for detailed information you can have a look on the previous videos in the same channel. So today we are talking about the passage number 2, a global analysis of nitrogen use efficiency, a measure of the amount of nitrogen a plant takes in its grow versus what is left behind as pollution. Says that using too much fertilizers will lead to increased pollution of waterways and the air. Currently, the global average for nitrogen use efficiency is approximately 0.4, meaning 40% of the total nitrogen added to the cropland goes into the harvested crop, while 60% is lost to the environment, says the study. More than half of the world's population is nourished by food grown with fertilizers containing synthetic nitrogen, which is needed to produce high crop yields. And plants take the nitrogen they need to grow, and the excess is left in the ground, water, and air. This results in significant emissions of nitrous oxide, a potent greenhouse and ozone depleting gas, and other forms of nitrogen pollution, including eutrophication of lakes and rivers and contamination of river waters. So, the whole passage is talking about the use and the misuse of the nutrients, which is impacting the environmental as well as the food qualities. So, which one of the following statement best reflects the most logical, rational, and crucial message implied by the passage? So, here it is written message. So, an enhanced efficiency of use of nitrogen is imperative for both food production and environment. B. Production of synthetic nitrogen fertilizers cannot be stopped as it will adversely affect global food security. Alternative to crops that require excess of nitrogen should be identified and cultivated, and conventional agriculture using synthetic fertilizers should be replaced with agroforestry, agroecosystems, and organic farming. So, Prerna, what's your answer? According to me, option D can be correct. Okay. Mansi? I would go with option A. Enhanced Okay, so efficiency. Oshik? ए हो सकता है ए. Okay, yeah, I'll also go with A. Prerna, here the D is wrong. The reason being, वहां पर लिखा हुआ है मैसेज क्या है, और डी में ये देखो लिखा हुआ है कन्वेंशनल एग्रीकल्चर जो है, जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स को यूज करता है, शुड बी रिप्लेस्ड. तो अगर उसको रिप्लेस ही कर देंगे एग्रो फॉरेस्ट्री से, एग्रो इकोसिस्टम और ऑर्गेनिक फार्मिंग से, तो ऐसा नहीं लगता ये इम्प्रैक्टिकल बात है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग अभी तक सिर्फ सिक्किम में हो पाई है और जगह बहुत थोड़ी थोड़ी है, नॉर्थ ईस्ट में होती है. इतने बड़े लेवल पे ऑर्गेनिक फार्मिंग से आप कैसे रिप्लेस कर दोगे? Okay, Pravesh, thank you. Okay. So in this passage, along with sustainable lifestyles, climate justice is regarded as a significant principle in environmental parlance. Both the principles have bearing on political and economic choices of the nation. So far, in our climate change summits or compacts, both the principles have eluded consensus among nations. Justice in the judicial sense is well defined. However, in the context of climate change, it has scientific as well as socio-political connotations. The crucial question in the next few years will be how the resources, technologies, and regulations are used to support the victims of climate change. Justice in climate is not defined to actions relating to mitigation, but also includes a wider notion of support for adaptation to the climate change and compensation for loss and damage. So this passage is talking about the climate change and adaptation, mitigation, along with the actions which are currently being taken in place. So, which one of the following best statement reflects the most logical, rational, crucial message? Climate justice should be ingrained in detail in the rules of all the new climate compacts and agreements. Okay, environmental resources are unevenly distributed and exploited across the globe. There is an impending issue of dealing with huge number of climate change victim, climate refugees, and climate change in all its connotations is mostly due to developed countries, and therefore their share of burden should be more. So, Prerna? D option is correct according to me.
Okay, Mansi. Okay, here option 2 wouldn't, it is not correct. मतलब इसके बारे में बात नहीं हो रही है. Then C में impending issue of dealing with the huge number of climate change. I think I'll go with A. Okay, Climate Oshik. justice की बात होगी. मैं वही बोलूंगा. ठीक है, ए. प्रेरणा यहाँ पर डी इस वजह से गलत हो जाता है क्योंकि पैसेज के अंदर बात हो रही है कि ओवरऑल आपको मिटिगेशन करना है, ओवरऑल आपको एडप्टेशन करना है. कहीं पर भी ऐसी बात या ऐसा मैसेज नहीं देखने को मिला है जहां पर डेवलप्ड कंट्रीज और नॉन डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में खींचा तनाव दिखने को मिले, नॉर्थ या ग्लोबल साउथ की बात हो, ऐसा कुछ भी नहीं है. बात हो रही है क्लाइमेट जस्टिस की बड़े लेवल पर, तो इसलिए ए ऑप्शन विल बी करेक्ट एज पर आर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, मुझे इसमें ये समझ नहीं आया कि यहाँ पे रूल्स की बात हो रही है. शुड बी एनग्रेन्ड इन डिटेल इन द रूल्स ऑफ ऑल द न्यू क्लाइमेट कॉम्पैक्ट्स. तो अच्छा, बट भैया क्लाइमेट जस्टिस हाँ, इम्पोर्टेंस तो की आप बात. सारे ऑप्शंस को कंपेयर करोगे, एक बार देखोगे कि क्या वो पैसेज से रिलेट करते, तो सबसे ज्यादा ए ही कर रहा है क्योंकि क्लाइमेट जस्टिस की बात हो रही है पूरे हाँ पैराग्राफ में. हाँ, थैंक यू मानसी जी. ठीक है. Sourcing food from non-agricultural lands, uncultivated systems such as forests, wetlands, and pastures, in addition to agri-lands, enables a systematic approach to food consumption. It allows rural and tribal communities to sustain themselves for the whole year and still clear of natural disasters and season-induced shortfalls of agri-food. Since the productivity of trees is often more resilient to adverse weather conditions than annual crops, forest foods often provide a safety net during the periods of food shortages caused by crop failure. Forest foods also makes important contributions during seasonal crop production gaps. So, which one of the following again logical rational message? Food yielding trees should replace other trees in rural and tribal areas and community owned lands. Food security cannot be ensured in India with the present practice of conventional agriculture. Wastelands and degraded areas in India should be converted into agroforestry systems to help the poor, and agro systems should be developed in addition to or along with conventional agriculture. Prerna. नहीं पता लग पा रहा, बट शायद से ए में. I'll go with D. Mansi. I'll also go with D. डी. Oshik. ठीक. तो ए कैसे होगा प्रेरणा? ए में तो लिखा हुआ है कि फूड यील्डिंग ट्रीज शुड बी should रिप्लेस्ड. replace other जरूर trees से. हाँ. in rural and tribal area. तो फूड यील्डिंग ट्रीज से आप अगर रिप्लेस कर भी दो, वैसे तो हो नहीं सकता, अगर आप कर भी दोगे तो इंडिया के अंदर इतनी डाइवर्स फूड आइटम्स खाए जाते हैं कि सारे के सारे पेड़ ऐसे हैं ही नहीं कि वो फूड यील्ड देते हो. मतलब क्रॉप से होता है, वो ट्रीज से तो फूड यील्ड नहीं होता है. तो वो कंसेप्चुअली भी रॉन्ग हो गई स्टेटमेंट. अगर हम एग्रो इकोसिस्टम्स की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? जैसे पैसेज में मेरी वो ये बात कर रहे हैं कि जो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है, मतलब क्रॉप से ज्यादा बेटर है कि तुम ट्रीज का सोर्स से मतलब वो करो, मतलब वो प्रोटेक्ट भी करते हैं इन्वायरमेंटली भी. लेकिन इसमें एग्रो इकोसिस्टम की बात हो रही है, तो ये उससे ही रिलेटेड है. मानसी क्या बताओ आप एग्रो इकोसिस्टम. एग्रो इकोसिस्टम्स मतलब अपार्ट फ्रॉम जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं एग्रीकल्चर करने के, और उसके अलावा जैसे मार्श लैंड्स हो गया, ग्रास लैंड्स हो गया, जो हमने क्वेश्चन भी डील किया, इको टोन्स, तो एग्रो फॉरेस्ट्री हो गया, ये इन सिस्टम्स को भी डेवलप करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अलावा अगर हम सिर्फ कन्वेंशनल फार्मिंग के ऊपर रिलाई करेंगे तो हम फूड सिक्योरिटी इंश्योर नहीं कर पाएंगे. तो उनका जो सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री रोल है एग्रो इकोसिस्टम्स का, वो इम्पोर्टेंट है, उसको भी साथ में हमें डेवलप करना इम्पोर्टेंट है. तो ये बोल रहा है पूरा ओवरऑल पैसेज. समझ आया प्रेरणा? मतलब मैं मेनली टर्म का मीनिंग पूछ रही थी, मतलब अपार्ट फ्रॉम जो नॉर्मल है उससे अलग हाँ, हटके मतलब उनको. एग्रो इकोसिस्टम्स मतलब एग्रीकल्चरल प्लस हाँ इकोसिस्टम्स जो हाँ. एग्जिस्ट करते हैं अभी नेचुरली इकोसिस्टम्स जो हैं, तो उसमें हम्म. एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आप बात कर सकते हो कि वो हमें कैसे मतलब फूड सिक्योरिटी में हेल्प कर सकते हैं. ये नहीं कि वहां पे भी आप एग्रीकल्चर करना वैसे स्टार्ट कर दो जो कन्वेंशनल मेथड है, पर जो हाँ, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं. ठीक है. ओके. Okay, so now we are taking the last paragraph. While awareness on use, misuse, and abuse, so it's a good term, use, misuse, and abuse of antibiotics is common knowledge, as is the impact of dousing poultry with antibiotics, the environmental impacts of antibiotics manufacturing companies,
not treating their waste has scarcely been discussed at any length or seriousness thus far. Pollution from antibiotics factories is fueling the rise of drug resistance infections. The occurrence of drug resistant bacteria surrounding the pharma manufacturing plants is well known. Most logical, practical message: it is necessary to put proper effluent treatment protocols in place. It is necessary to promote environmental awareness among people. Spread of drug resistant bacteria cannot be done away with, as it is inherent in modern medical care, and pharma manufacturing companies should be set up in remote rural areas away from crowded towns and cities. Prerna, Option A. Mansi, Here, I would go with option A. Oshik. हाँ ए होगा. ठीक है. Okay, so now we are winding up. So thank you so much and keep watching Ansarkari. Stay tuned with us.